Hello everyone. Friends, in this session, we will discuss Flywheel AG Gate previous year problems. So this is beautiful session. सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं कि ट्रांस सीजी ने 2 दिन पहले इस साल का जो गेट क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। transcg.org को जब आप टाइप करोगे तो ये होम पेज ओपन होगा and after clicking this pop-up you will be redirected to solution page, and here you will see detailed solution of all previous year problems. Sorry, this year problems. Agriculture engineering get 2022 detailed solution. तो टोटल आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। पेजेस आप देखेंगे 85 पेजेस यहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने रैंक को और मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे, टोटल आपको सॉल्यूशन दिखते जाएगा। किसी भी डायरेक्ट पेज पर जंप करना है, देन यू कैन जंप to that specific page directly. Okay, come to today's lecture. This is part 3. 2 सेशन में हम लोगों ने फंडामेंटल एंड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, एंड दिस इज एग्जैक्टली डेडिकेटेड टू प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टाइम गेट में ये प्रॉब्लम पूछा गया और मैं 2015 से जब भी फ्लाईव्हील स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग में इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं। हाउ टू कैलकुलेट टर्निंग मोमेंट अवेलेबल एट इंजन शाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट। और फर्स्ट टाइम इस साल गेट ने इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसके कॉन्सेप्ट बिफोर लॉन्चिंग ऑफ गेट रेस्पॉन्स पेपर डिलीवर किया गया था न्यू बैच में, इस साल वाले बैच में। देन रेस्पॉन्स शीट आया है, तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मैंने 23 वाले बैच के स्टूडेंट को बोला था सॉल्यूशन करने के लिए, और एक स्टूडेंट ने इसका सॉल्यूशन करके भेजा था। मीनिंग क्या है? गेट कॉन्सेप्ट पूछता है, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट भी होते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट की कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए ये हम लोग बोल सकते हैं, सिस्टमेटिकली अगर आपको टीच किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेचर, देन पाएंगे कि 90% और एबव 90%, नॉट 100%, क्वेश्चंस आपके लर्न किए हुए कॉन्सेप्ट से आएंगे। क्वेश्चन न्यू भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वो रिपीट करेगा। लैंग्वेज चेंज होगा, ट्विस्ट होगा, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। आपसे ना सॉल्व हो ऐसा कतई नहीं सोचा जाता है, लेकिन वो चेक करना चाहते हैं कि सॉल्व भी हो आपसे
और किस एक्सटेंट में आपने सिलेबस को प्रिपेयर किया है, वो उनका जानना होता है। आप फॉर्मूला बेसिस पर अपने अगर आपको प्रिपेयर करके गेट एग्जाम दे रहे हो, 50 क्रॉस करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, इवन 50 क्रॉस करने में। कॉन्सेप्चुअल अगर आपके पास स्टडी है, देन कुछ भी हो सकता है। इस साल वही हुआ है। अब तक मैं कुछ पेपर फैकल्टी की हेल्प से टीच करता था। लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट सिलेबस खुद से पढ़ाया। और मेरी ये पैशन है पढ़ाने की, कि जो कुछ भी पढ़ाऊं मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊं आपको। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमने हिस्ट्री क्रिएट किया है। एज पर माय सॉल्यूशन ऑफ दिस ईयर गेट पेपर, highest marks of trans student is 82, second 79, third 75। ये हाईएस्ट मार्क चेक कर लीजिएगा। गेट के एग्रीकल्चर गेट के जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे रिजल्ट्स है, उन सब में ये बेस्ट है। तो ये इस तरह रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। कंसेप्चुअल स्टडी में टाइम लगते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज्यादा होती है। आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिवाइज ऑलरेडी कवर्ड पोर्शन इन फ्रीक्वेंट मैनर। उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा होती है, एप्लीकेशन की इफिशियंसी। तो फर्स्ट टाइम नो डाउट पेन होती है, लेकिन जब आप प्रॉपर वे में किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होकर प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी आपका वरी फिनिश। मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का वर्क कर रहा है, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। बट कंसेप्चुअल स्टडी होना चाहिए। फॉर्मूला सिस्टम मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द लिमिट ऑफ 50। आप करके देख लेना फॉर्मूला से। तो सावधान होना चाहिए आपको इस जगह पर कि हमें पढ़ना नहीं है और वैसे जगह पर भी नहीं जाना है जहां पर इस तरह आपके साथ गेम प्ले किया जा रहा है। कुछ दिखावे होते रहते हैं। क्लियर हो गया होगा इस साल आप लोगों को। हमने वो सारे हथकंडे और ट्रिक्स ऐसे इंस्टीट्यूशन के बंद कर दिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द क्रैंक रेडियस एंड कनेक्टिंग रॉड लेंथ ऑफ एन आईसी इंजन आर 250 mm and 1000 mm respectively. The crank turns 100 degrees from the head dead center, and the net force acting on the piston along its direction of motion is 35 kilonewton. The turning moment of the crankshaft at the instant in kilonewton meter is when it is making an angle 100 degree from the head dead center position of the crank. So guys, head dead center, bottom dead center, these are two extreme positions of crank in vertical internal combustion engine, and corresponding names for horizontal internal combustion engine are IDC equivalent to head dead center, ODC outer dead center, inner dead center, ODC equivalent to bottom dead center. So this is position of the crank on which
piston inside cylinder takes its position at top. So dear students, this is HDC in vertical internal combustion engine and IDC in horizontal internal combustion engine. Position of the crank. But in the question, when crank is making an angle 100 degree from the head dead center position of the crank. So this is actual position of the crank. No doubt this is connecting rod, piston and cylinder. Theta is given 100 degree. Crank radius R is 250 mm. Connecting rod length L 1000 mm. The net force acting on the piston along its direction of motion is 35 kilonewton. So dear students, this is the direction of motion of the piston. Piston is reciprocating along this line. So net force on the piston acting in the direction of motion, that is F, is given 35 kilonewton. We have to calculate turning moment of the crankshaft at this instant when crank is making angle 100 degree from head dead center position of the crank in kilonewton. So first we define turning moment. Find component of, or find simply force along connecting rod. Here Fc cos beta is equal to F. This is also a concept. I have discussed why Fc cos beta is F, not F cos beta is equal to Fc. I have discussed in first lecture of Flywheel. F is given, but beta is not given. Alpha is given. Theta is 100 degree. So from theta LR, we can find the value of beta by using sine rule. This length upon sine of opposite angle, L upon sine theta. This length upon sine of opposite angle, R upon sine beta. LR, theta, all are given in the problem. So we can find beta. And here I have obtained beta. It is 14.25 degree. Once we have beta, Fc is known. F upon cos beta. So Fc is 36.11 kilonewton. This is line of action of Fc. Fc is acting along this line. Fc is force along connecting rod. We have to find turning moment acting on crankshaft. First we define crank effort. That is the component of Fc perpendicular to crank. This is desirable. Fr, crank effort. Definitely this is 90 degree. Crank effort. Because this component of Fc is going to turn crankshaft. Crankshaft को इस Fr के द्वारा ही टर्न किया जाएगा. Clear? No doubt it has two components. One component perpendicular to
crank and second component parallel to crank. So second component which is parallel to crank is not going to produce any kind of turning moment or torque. So perpendicular component is useful in this regard. So we are finding component of force along connecting rod perpendicular to crank. For this, we need this angle. And from geometry, we are very comfortable to find this angle because theta, beta all are known. So this is 180 minus theta plus beta. This angle plus this angle plus this angle is 180 degree. So this is known. Minus 90 minus theta plus beta. So FC cos of this angle, this will give FC sine theta plus beta. Theta, beta, FC, all are known. We have crank effort. So turning moment or torque acting on crankshaft at this configuration of single slider crank mechanism, FC into R. FR into R. FR into R. It is 8.23. This is in kilonewton and this is in meter, kilonewton meter. So this is correct answer. So जिसका भी एक आंसर आ रहा है वो करेक्ट है. Get 2022 marks 2. Easy question. Second problem. A flywheel and clutch assembly weighs 200 Newton and has a radius of gyration 150 mm. Weight of the rotating assembly. The next element in power transmission system after flywheel is clutch. And sometimes flywheel is one disc of clutch. क्लच के लिए ये काम में भी आ जाता है, देखेंगे हम लोग. So flywheel and clutch assembly weighs 200 Newton and has a radius of gyration 150 mm. If the engine speed is 3000 rpm, the kinetic energy possessed by the rotating assembly in kilojoule is. So kinetic energy is half I omega square. We find I is mk square. K is given in the problem, radius of gyration. M is not given. Weight of rotating assembly is given. So weight divided by 9.81. So this is mass of rotating parts. So this is moment of inertia. RPM of engine shaft is given 3000 RPM. We need omega, angular speed, in radian per second. So it is 2 pi n upon 60. 2 pi 3000 by 60. This is radian per second. So kinetic energy first we'll get in joule and then kilojoule by dividing 1000. This is a beautiful problem. A thresher requires a torque of 5000 plus 500 sine alpha. Thresher requires, operation requires. This is resisting torque acting on engine. This is external load. Okay, guys, external load is varying. This torque is coming from operation where load is varying. So this is obvious case in case of threshing operation. This year we have also problem of threshing. A thresher requires a torque of 5000 plus 500 sine alpha Newton meter to drive, where alpha is the angle of rotation of the shaft measured from certain datum. The thresher is directly coupled to an engine
which produces a torque of 5000 plus 600 sine 2 alpha. So this is torque produced by an engine. Engine is producing torque in order to overcome torque requirement, because operation in thresher requires this kind of torque. So guys, this is external torque, and external torque in this problem is varying. And all time engine is producing variable torque. Engine is producing variable torque all time. Because inside engine, suction, compression, power, exhaust, strokes are involved. Suction demands torque or power or energy in order to suck air fuel mixture in petrol engine or fresh air in diesel engine. So torque requirement is obvious. Similarly, in compression, work is required to execute compression process. And same in exhaust process. And in power stroke, engine is producing energy or torque. So torque is varying. Variable amount of torque is involved in various strokes of internal combustion engine. So engine torque is always variable. Engine is producing torque to overcome load acting on it. So load, torque due to external load may be constant or variable. In this problem, it is varying. The flywheel and the rotatory parts attached to the engine have a mass of 500 kg at a radius of gyration 0.4 meter. So mass of rotating part can store kinetic energy, can supply kinetic energy when it is required. The maximum angular acceleration of the flywheel in radian per second square will be. Dear students, it is better to write information given in the problem. So you will find a comfortable situation. No need to read the entire questions again and again. So it is better to extract data given in the problem. Torque requirement by thresher, torque produced by an engine, mass of rotating parts, radius of gyration. We have to find maximum angular acceleration of the flywheel in radian per second square. This is third session. दो सेशन में क्या किया होगा? कॉन्सेप्ट, एक्सीलरेशन कहां छुपा होता है फ्लाईव्हील के प्रॉब्लम में? अब डायरेक्ट इसी में आए होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, उसके लिए मुझे माफ करिएगा. Delta T axis word is very suitable in the problem of flywheel. So delta T axis is equal to I alpha. Here alpha is involved, angular acceleration. So maximum value of alpha means delta T axis maximum, because एक बार जो है ना फ्लाईव्हील क्रिएट हो गया, तैयार हो गया, तो फिर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगी. वेरिएबल यहां पर है, ये है, इसी की वेरी होने से ये वेरी कर रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम एक्सेस टॉर्क available on crankshaft or engine shaft. We have T alpha diagram, turning moment diagram, and external torque crank
rotation angle diagram. First T alpha diagram is for thresher torque 5000 plus 500 sin alpha. If you put the value of alpha 0, you will get this value 5000. It is varying according to sine function. Definitely period of this variation will be 2 pi. So friends, this is external torque variation. Now we draw turning moment diagram produced by an engine. It has same 5000 plus 600 sine 2 alpha. So this is a periodic function and its period is defined by the period of sine 2 alpha, because due to this sine 2 alpha it is varying. So this will decide period of this engine torque. We know sine alpha has 2 pi period, so sine 2 alpha will have 2 pi upon 2, sine 3 alpha 2 pi upon 3. Here we need 2 pi by 2. So period of this variation is pi, and again it is repeating. So first we discuss inside its period length. This is also easy to construct. One important point, friends, from last two session analysis, we know mean torque of this wiring torque is nothing but just a constant part of it, and it has same mean torque. Otherwise, this is not a good combination of thresher and engine. अगर नहीं होगा तो या तो जो है ना क्रैंकशाफ्ट की स्पीड बढ़ते चली जाएगी या क्रैंकशाफ्ट की स्पीड 0 हो जाएगी, या तो जो है ना इंजन की स्पीड बढ़ते चली जाएगी या इंजन की स्पीड घटते घटते इंजन बंद हो जाएगी. कहने का सेंस क्या हुआ, अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क का कांस्टेंट पार्ट है, दिस इज आल्सो मीन, एंड वी हैव फार्मूला टू फाइंड मीन. हमने डिस्कस किया ना, 0 टू इट्स पीरियड 2 पाई 5000 प्लस साइन अल्फा डी अल्फा 0 to 2 pi d alpha. You will get same 5000 after this integration. So this constant part will give mean torque of this wiring torque. So it has same constant part, so same mean torque in this case also. But its period length is pi, and here it is 2 pi. Both have same mean torque. Dear students, we know work done by or work done in a cycle is simply mean torque into cycle length. Here cycle length is 2 pi. So this is work done by, work consumed by thresher, okay, in its cycle, and work done by engine, साइकिल भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा. वर्क डन बाय साइकिल, वर्क डन इन अ साइकिल बाय इंजन, टी मीन इनटू पाई. डियर स्टूडेंट्स, यहां साइकिल लेंथ कितना है, पाई है, और यहां पर 2 पाई है. इट इज क्रिएटिंग दिस अमाउंट, दिस इज डिमांडिंग दिस अमाउंट ऑफ वर्क. Engine is creating same amount of work in this length, because engine is creating this amount of work in
each cycle, if we add another cycle, we will get same amount of work. So total work कितना हो जाएगा in 2 cycle, because इसका एक साइकिल इसके 2 साइकिल के बराबर है, तो वो आपको 2 पाई में. In this way guys, engine is producing this amount of energy and thresher is demanding same amount of energy. Okay, so there is no any kind of energy available on engine shaft, excess energy. So a speed of engine shaft will remain constant during this operation, and this is required. Constant speed operation is required, otherwise a speed of the engine will increase or decrease. कोई अगर जो है लोड ज्यादा हो जाएगा तो इंजन नहीं चला पाएगा, लोड कम हो गया तो इंजन की स्पीड बढ़ती चली जाएगी. अगर जो है ना इंजन की स्पीड कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं लगी, गवर्नर पड़ेंगे तो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है वो. लेकिन अभी हम यहां पर बात करते हैं, इस पॉइंट पर बात करते हैं, गवर्नर को हटा के बात करते हैं. तो इसको देख के पता चल रहा है कि क्यों जो है ना ये कांस्टेंट पार्ट सेम किया गया था. ठीक है, इससे ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंज्यूम कर रहा है, तो इसी से हमें एक्सेस मिलता है कि क्रैंक शाफ्ट पर एक्सेस टॉर्क कितना बचेगा. इंजन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया और साथ ही साथ थ्रेशर ने कंज्यूम किया, जो रिमेनिंग है शाफ्ट पर अवेलेबल है. इंजन इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क and thresher is consuming torque at the same instant. So remaining torque is available on the crankshaft, and this will increase or decrease. अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा स्पीड का, निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, and this is equal to I alpha. So T engine minus this alpha is this upon T engine minus T thresher by I. We have already calculated I. We have to find maximum acceleration. So guys, its maximum value is required. In order to find its maximum value, differentiate this T engine minus T thresher with respect to its independent variable. Alpha is its independent variable to 0. Find the value of alpha. डिफरेंशिएट किया दोनों के डिफरेंस का, डिफरेंस लेंगे तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा. sin 2 alpha 600 sin 2 alpha minus 500 sin alpha, वो 5000 कैंसिल हो जाएगा. So this is excess torque and we are differentiating this excess torque with respect to its independent variable and equating it to 0. Here we get the value of alpha 35.9 degree and 127.61 degree. Find the value of delta T excess at this position of the crank and this position of the crank. At this position of the crank, delta T excess on crankshaft is coming 276.79 Newton meter, and at this position it is coming minus 973.27 Newton meter. Question is asking to find the maximum acceleration. This will cause acceleration and this will cause deceleration. Question is asking to find maximum acceleration. So guys, we use this maximum value of excess torque, and it is I alpha 276.79, alpha 276.79, and already we have calculated I. This is your answer. So conceptual learning is best thing. बहुत आनंद देगा आपको. ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, कोई चीज को ऐसे पढ़ते हैं, बार बार नहीं पढ़ना होता है. एक बार अगर पढ़ लेते हैं चीजों को सही से तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. अदरवाइज आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार वही करना पड़ेगा. अगर काम को सही ढंग से नहीं किया तो उस काम को बार बार करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा. छोड़ेंगे तो जो समय लगाए थे वो लॉस होगा. करेंगे सिस्टमेटिक वे में नहीं तो भी कोई बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा.
कॉन्सेप्ट की पकड़ बहुत लंबी होती है, कॉन्फिडेंस होती है उसमें, और अचीवमेंट होता है, और हैप्पीनेस फाइनली मिलता है। चाहिए अल्टीमेट हैप्पीनेस, सिस्टम को फॉलो करें। द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन क्रैंकशाफ्ट ऑफ 2-stroke इंजन इज गिवन बाय द इक्वेशन 450 plus 30 sin 2 theta minus 90 cos 2 theta, where theta is the crank angle displacement from inner dead center. Again, guys, theta is defined in the same manner. Okay, crank position from inner dead center. If the resisting torque is constant, the power developed by the engine at the speed of 1500 rpm is. So it is better to write the expression of power developed by an engine, mean torque into angular speed in radian per second, and this is in Newton meter, and this is in radian per second. Okay, you will get Newton meter by second, or joule, or finally kilo. So kilo, this is joule upon second, watt, and finally in kilowatt. किलोवाट में हमें आंसर निकालना है। तो क्या रिक्वायरमेंट है? मीन टॉर्क को निकालना है। एंड वी नो गाइस, in such expression, this constant part is always mean. And how to calculate mean? We have mathematical equation. Mean of torque, integration of torque with respect to its independent variable. Torque is varying with theta, theta varying independently, and torque is depending upon the value of theta. We integrate t with respect to theta in its cycle. So it is required to find the length of cycle or period. अब यहां पर दो है, किस पीरियड क्या होगा? साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा दोनों है। गाइस, हियर दिस इज द मेथड टू फाइंड द पीरियड ऑफ सच टर्निंग मोमेंट। पीरियड ऑफ साइन टू थीटा पाई, और डिनोमिनेटर में हमने 1 रख दिया। पीरियड ऑफ कॉस टू थीटा पाई अपॉन 1. So period of entire t, LCM of terms in numerator divided by SCF of numerator and denominator. LCM of pi and pi is kept in numerator, and SCF of 1 and 1 is kept in the denominator. LCM पाई पाई का क्या होगा? पाई, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 1 का क्या होगा? दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1. So pi the period. So we integrate this in its period divided by integration of independent variable in the same period. You will get 450. Unit is in Newton meter. Next requirement is to find omega. Engine is running at 1500 rpm. Omega 2 pi into 1500 upon 60. Then we will get its value in radian per second. Tm and omega both are known. Putting the value of Tm and omega, we will get power in watt, and finally by dividing 1000 we will get in kilowatt. Same process. Okay. Next problem. The kinetic energy available from a tractor engine flywheel rotating at 2000 revolution per minute is 100 kilojoule. Kinetic energy available from a tractor engine flywheel rotating at 2000 revolution per minute is 100 kilojoule. If the radius of gyration is 0.27 meter, the weight of the flywheel is in Newton. We have to find the weight of flywheel in Newton. First we find mass of flywheel, and then
This is the weight of flywheel. Kinetic energy is 100 kilojoule. RPM 2000. Radius of gyration 0.27. Dear student, this m is hidden in the expression of kinetic energy, half I omega square. Half I. Here, radius of gyration given, it means mk square omega square. From this n, we can find omega easily. Okay. K given, kinetic energy given. So guys, we'll find m and then mc. 613. Close to option D. A solid disk. This is disk. Here mass is distributed uniformly over the area of flywheel. A solid disk, flywheel having 20 kg mass and 800 mm diameter, rotates at 2400 rpm. The stored energy in the flywheel is mass, diameter, a finale radius, speed in rpm, and this is in radian per second. For solid disk, this is moment of inertia, mr square by 2. If mass is distributed at r radius, like rim type disk, simply moment of inertia is mr square. But here for disk type flywheel, moment of inertia is mr square by 2. Mass, radius, all are given. This is moment of inertia. Kinetic energy, half I omega square. This is very simple problem, 50.53. Option B is correct. This is most beautiful problem. All are previous year gate problems. Okay. The turning moment diagram of engine is represented by the following equation. Engine is producing torque, and we know engine torque produced by engine is varying with crank rotation angle. Alpha, angle moved by the crank from inner dead center. Assuming the resisting torque to be constant. Dear students, in this problem, resisting torque or external torque acting on this engine is constant. जो resisting torque है वो constant है. कितना रखना है? Because torque coming from external load is constant, and from concept we know this constant must be equal to mean torque of engine वायरिंग टॉर्क. इंजन वायरिंग टॉर्क के मीन टॉर्क के इक्वल होना चाहिए. मैंने कॉन्सेप्ट में बोला था, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा. बिकॉज हियर वैल्यू ऑफ external or resisting constant torque is not given in the problem. You have to set its value from concept. Otherwise, this combination of external load and engine torque is not going to perform its given functionality. Functionality is to execute external work from where constant torque is acting on the engine. So mean torque of engine must be equal to mean torque of external torque. एक्सटर्नल टॉर्क के मीन का होना चाहिए. एक्सटर्नल टॉर्क के जो मीन टॉर्क है और इंजन टॉर्क का मीन टॉर्क है, दोनों का इक्वल होना चाहिए. Then guys will see a constant speed operation and this is desirable. हम नहीं चाहते कि इंजन अपना काम करे तो स्पीड में फ्लक्चुएशन हो या इंजन बंद ही हो जाए या इंजन की स्पीड बढ़ते चला जाए. इंजन कांस्टेंट स्पीड पर ऑलमोस्ट वर्क करे. मीन स्पीड के आसपास थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगा. ठीक है. तो मेरे दोस्तों, मीन टॉर्क of a constant torque
आपके पॉकेट में 100 रुपया है और पूरे महीने वो 100 रुपया पड़ा रह गया, ऑन एन एवरेज कितना पैसा आपके पॉकेट में था एक मंथ में? 100 रुपया ना। कांस्टेंट ही मीन होती है। ओके, अदरवाइज आज 100 है, कल 10 हो गया, कब 90 हो गया, 80 हो गया, तो पूरे मंथ में हमारे पास इंडिविजुअल डे को कितनी वैल्यू थी सबको जोड़ के आप नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ डे से डिवाइड करते हो, ऐसे में निकालते हो, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट पता चल गया कि फ्रॉम कॉन्सेप्ट मीन टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू मीन टॉर्क ऑफ इंजन। तो पहले तो यही रखेंगे, रेसिस्टिंग टॉर्क विच इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू is equal to mean torque of engine torque. This is engine torque, इसका मीन यही आएगा। तो ये आपका पता चल गया 25,000 जो है ना रेसिस्टिंग टॉर्क है। चलिए ये इतना कंसेप्ट हो, आगे बढ़ते हैं। द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन एट मीन स्पीड ऑफ 200 rpm, दिस इज रिपीटेड प्रॉब्लम, वी आर नॉट गोइंग टू waste time to solve this problem again and again. Okay, so I leave this problem. The change in torque at any given instant. The change in torque means if you have concept, then you can understand the meaning of this line. Change in torque, hey bhai, because torque available on crankshaft, वो तो crankshaft पर ही है ना, क्रैंक एफर्ट ने टर्निंग मोमेंट अवेलेबल कराया क्रैंकशाफ्ट पर, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ वायरिंग टॉर्क। ओके, सो टॉर्क ऑन क्रैंकशाफ्ट इज वायरिंग, and this engine is coupled with external load is demanding torque equal to this value. So engine is producing this torque and a constant resisting torque of this value is acting. तो रिमेनिंग जो बचा वही आपसे पूछा जा रहा है, द चेंज इन टॉर्क। तो टॉर्क में जो चेंज होगा एट एनी गिवन इंस्टेंट, ये तो केवल इंजन का है, बट दिस इंजन इज कपल्ड विथ एक्सटर्नल ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इज अप्लाइंग रेसिस्टिंग टॉर्क ऑफ वैल्यू इक्वल टू इट्स मीन। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपसे कुछ होता नहीं। तो गाइस ये इतना कंज्यूम कर लिया लोड ने और इतना इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो बचा हुआ है वही जो है ना चेंज को अब बताएगा। अब किसी भी इंस्टेंट पर चेंज निकालना हो तो वो चेंज इन टॉर्क, तो एक्चुअली में इसी एक्सेस टॉर्क की बात की जा रही है, दिस माइनस 25,000। क्लियर, द चेंज इन टॉर्क एट एनी गिवन इंस्टेंट, नॉट टी, केवल टी नहीं, क्योंकि इंजन के साथ लोड भी है ना, लोड की कितना लगा रहा है वो कंसेप्ट से लाना पड़ेगा, वो 25,000 की वैल्यू होगी। तो आप 25,000 25,000 सब्सट्रैक्ट कीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन टॉर्क एट एनी गिवन इंस्टेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस इंजन विद दैट लोड। ठीक है, सब ठीक है ना। And this is also known as excess torque. Next problem, the angular acceleration of the flywheel at alpha is equal to pi by 4 and the moment of inertia of 45,000 Newton meter square of the flywheel. We have to find angular acceleration at this position of the crank. Dear students, angular acceleration is involved in this expression delta t. Axis is I alpha. Angular acceleration delta t axis upon I. Moment of inertia is given 45,000. And delta t axis, this is also delta t axis. Find the value of delta t axis at alpha is equal to pi by 4. Putting the value here, you will get answer and is with concept. The torque output of an engine is given by 18,000 plus 8,400 sin 2 alpha minus 4,600 cos 2 alpha Newton meter, where alpha is the angle moved by the crank from inner dead center. If the resisting torque is constant, again guys,
in this problem, resisting torque acting on engine is constant. Find the horsepower developed by engine at 200 rpm and the excess energy for designing the flywheel at alpha is equal to pi by 4. Next part of this question is beautiful. In order to get the answer of the last part of this question, you will learn a lot of things. पूरी की पूरी जो है ना कॉन्सेप्ट फ्लाईव्हील का इसी एक प्रॉब्लम में हिडन है, एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम. आपको अच्छा लगे ना लगे उससे गेट को कोई मतलब नहीं है. अगर आपको गेट जैसा लगे, yes, गेट इज आस्किंग such kind of problem and I am also liking that problem. मैच हुआ, रेजोनेंस होगा, मतलब वो कहा ये करो तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम्हें जो है ना रिवार्ड दूंगा, डिग्री दूंगा, और उस डिग्री को देखकर कंपनी वाले आपको कहेंगे यस दिस इज सर्टिफाइड स्टूडेंट, इसने जीवन में कुछ किया है. दिस इज नॉट अ ससुर काइंड ऑफ पीपल, दिस इज लेबोरियस, जेन्युइन, इंटेलिजेंट एंड अपने को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करने वाला है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन इससे चलेगी, आवारा से नहीं चलेगी, इसलिए आवारे को छाड़ देते हैं लोग. जाओ 20 नंबर 30 नंबर 25 पक 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 आवारा है तू. Dear students, so engine torque is given here. Find the horsepower developed by the engine. So this is very easy. Divided by 746 घोड़े की शक्ति. सेकेंड पार्ट में बहुत आनंद आने वाला है. सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है. आपको इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम का, इस टर्निंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा. विदाउट डायग्राम आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर सकते. एंड हाउ टू ड्रॉ डायग्राम वी विल लर्न इन curve tracing part of engineering mathematics. I will teach curve tracing also. Actually, my favorite subject is mathematics. And due to love with mathematics, actually I am performing little bit good in this area also. So math पहले सही होना चाहिए. मैथ के बिना जो है ना इंजीनियरिंग अच्छा नहीं माना जाता. हाँ, आप लोग तो कुछ भी डाइजेस्ट कर लेते हैं. मैथ भले आपका अच्छा ना हो, लेकिन आपका एफएमपी बहुत अच्छा रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर हार्ड वर्क. आपने एक पार्ट में हार्ड वर्क किया, दूसरे में कम किया, एक को रटा मार दिया है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ भी, इसलिए अच्छा हो गया. बट मैथमेटिक्स एकदम लैंग्वेज है इंजीनियरिंग का, उसे बेसिक तो होना चाहिए. यस, सो गाइस वी आर गोइंग टू ड्रॉ टर्निंग मोमेंट डायग्राम टू सॉल्व दिस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम. इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टॉर्क की मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमा कहां पर है वो निकालेंगे. इसका पीरियड तो मुझे पता ही है कितना होगा, इसका मीन मुझे पता है कितना होगा. पीरियड इसका पाई होगा, मीन इसका 18,000 होगा. लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम कहां होगा उसको भी निकाल लो, एंड मीन के साथ इसका इंटरसेक्शन कहां पर होगा उसे भी फाइंड आउट कर लो. अल्फा इजकल टू 0 पर वैल्यू कितनी होगी, वही अल्फा इजकल टू पाई पर होगी, बिकॉज पाई इज इट्स पीरियड. तो 0 पर होगी, तो पाई लेंथ के बाद पाई पर भी वैल्यू 0 प्लस पाई पाई, वहां पर भी वही वैल्यू होगी. तो 0 पर निकाल लीजिए, वही पाई पर वैल्यू होगी. क्या क्या काम करना है, फाइंड क्रैंक एंगुलर पोजीशन वेयर टर्निंग मोमेंट इंटरसेक्ट्स इट्स मीन टॉर्क लाइन, वो चाहिए पॉइंट. एंड फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द क्रैंक वेयर टर्निंग मोमेंट हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम. In order to find maximum and minimum, we differentiate turning moment with respect to alpha and equate it to 0. We'll get 2 alpha is equal to minus 61.29 डिग्री. यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी लर्न कर लीजिए, इसको भी लर्न कर लीजिए. बिकॉज ये तो आप सीधा करोगे 2 alpha is equal to tan इनवर्स ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू इनसाइड योर कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर से करोगे ये वैल्यू दे देगा.
अब इसको मीनिंग समझना जरूरी है, इसका मतलब क्या, निगेटिव क्यों आया भाई। ये tan निगेटिव कहां कहां होता है, tan जो है ना निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। जानते यही लाइन इधर आती है वो सेम। अगर मैं इस एंगल के बात करूं, tan of this angle is this upon this. This is negative length, this is positive length y, and this is the direction of x. So this length is negative x and this is positive. So tan of this angle is positive upon negative. Tan of 2 alpha is negative. इसका मतलब वो एंगल जो दे रहा है वो क्लॉकवाइज में दे रहा है, इसलिए निगेटिव मानो उसे, और वो कितना है 61.29 है। इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, तभी जाकर जो ना ये आप देखेंगे। अब इसको क्या करना हमें चाहिए, ये एंगल चाहिए, वी नीड दिस एंगल, जीरो पोजीशन जो इनर डेड सेंटर है वो चाहिए। कैसे आएगा, 180 माइनस 61.29, ये वाला वैल्यू आया, ठीक है, 118.7059, ठीक है। वही जो ना सेम चीज आपको इधर से भी मिलेगा, इसमें ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सेम वैल्यू पर आपको एक ये एंगल डिफाइन करके देगा वो। तो इस एंगल के लिए नहीं चाहिए मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, अनदर एक और आपको एंगल देगा। ये एंगल कैसे आएगा, जो ये एंगल निकाले थे उसमें आप 180 ऐड कर दीजिए तो ये टोटल एंगल हो गया। तो आपका ये जो निकल कर आया था 118.70, इसमें आपको ऐड कर देना 180, तो दो आपके एंगल निकल गए जहां पर tan की वैल्यू इतनी होती है। हाफ कर दीजिए इसे, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी 59.35 एंड 149.35। ये दो क्रैंक क्रैंक पोजीशन है जहां पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आ रही है। यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ t एट दिस एंड दिस पोजीशन ऑफ द क्रैंक। दोनों लाना जरूरी था क्योंकि क्रैंक पीरियड में ये दोनों एंगल को कवर करेगा और दो बार इस वैल्यू को शो करेगा। क्लियर, चलिए अब इसमें से मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। इन ऑर्डर टू चेक maximum and minimum at these two angular position of the crank, further we differentiate this expression with respect to alpha and check its sign. Second derivative जब निकालेंगे तो ये आएगा, okay, putting the value of this alpha and this alpha in second derivative of t, so at alpha it is coming negative and at alpha 149.35 it is coming positive. It means second derivative gives a negative value at this angle. This angle is a point of maximum and this is point of minimum. यहां पर टॉर्क मिनिमम होगी और यहां पर टॉर्क आपका इस वाले एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब हमने क्या बोला था, आपको नेक्स्ट क्या करना है, टॉर्क एंड टीमिन लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, at intersecting point the value of tmin and actual torque produced by an engine both are same, so that guys we are equating and we will find angular position of the crank at which tmin and t both are equal. It means t is crossing, t is intersecting tmin line. तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट किया, वहां से भी जो सेम स्टाइल में एक 28.70 आया, एक आएगा आपका 180 ऐड करके पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू दिख रही है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होती है, तो 180 ऐड करते, आफ्टर एडिंग 180 टू दिस वैल्यू we'll get second angle at which tan to alpha is this. Okay, from this we can find alpha. तो ये अल्फा आपको निकल गया। ये क्या बता रहा है, जहां पर आपका एक्चुअल टर्निंग मोमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंजन इंटरसेक्ट्स टी मीन लाइन। टी मीन कितना हो जाएगा, दिस, सो दिस इज टी मीन लाइन एट अल्फा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंजन टॉर्क। इसमें अल्फा की वैल्यू 0 पुट करो
ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में दिस इज टी टॉर्क प्रोड्यूस बाय एन इंजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंजन टॉर्क एट अल्फा इज इक्वल टू 0। सो वहां पर आपको वैल्यू आएगा 13,400 न्यूटन मीटर। सो एट अल्फा इज इक्वल टू 0, इंजन टॉर्क इज दिस एंड दिस इज मीन टॉर्क। ओके एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो है ना मैक्सिमम कहां पर आया है, 59.35 डिग्री पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मिनिमम कहां पर आया है, ओहो, कर्व जो है ना आपका रॉन्ग ट्रेस हो गया, कर्व जो है ना रॉन्ग ट्रेस हुआ है, कर्व रॉन्ग ट्रेस हुआ है, दिस इज करेक्ट। मिनिमम आपका, मैं करेक्ट कर दूंगा डायग्राम को, डोंट वरी। ये तो आपका इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है, यस वो इंटरसेक्टिंग वाला हमने पॉइंट दे दिया, यहां से आया एंड दिस इज, देखिए टीमिन को इंटरसेक्ट किया ना 104.35 एंड एक टीमिन को कहां पर इंटरसेक्ट किया 14.35। देखिए एक्चुअल टॉर्क इंटरसेक्ट टीमिन at this angle 14.35 and again it is intersecting टीमिन at 104.35 एंड मिनिमम इसका कितना आ रहा है, मिनिमम आपका यहां इस पॉइंट पर आ रहा है और इसका देखिए लोकेशन 104 से ज्यादा होगा। मैथमेटिक्स ऐसे आपको हेल्प करता है। 149.35 100, दिस इज 149.35, ये यहां पर मिनिमम है एंड देन जो है ना साइकिल कंप्लीट हुआ 180, क्योंकि इसकी पीरियड 180 है। जितनी वैल्यू जीरो पर थी वही आपको 180 पर भी होगा, क्योंकि इसकी साइकिल है, फिर से ये कर्व को रिपीट करेगा, एकदम ऐसा ही रिपीट करेगा। साइकिल में डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, डन। सो दिस इज एक्चुअल डायग्राम। तो मैं क्या करता हूं अभी, इस वाले को तब तक मैं व्हाइट कर देता हूं, यस दिस इज करेक्ट डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू प्रॉब्लम। The excess energy for designing the flywheel at alpha is equal to pi by 4. At alpha is equal to pi by 4. This is turning moment diagram, everything we have shown here. So this is location of the crank corresponding to alpha is equal to 45. ये वाला position. Excess energy above mean torque line energy is excess because this engine is coupled with external load which is consuming this amount of torque all the time. So energy corresponding to this region is consumed by external load, and this is the excess amount of energy which is stored in flywheel at this position of the crank, yahi store ho jayega. We need this energy. Dear students, in order to find energy we use this expression torque. We need this energy na, this energy only. So this is T and this is T min, T minus T min. Integrate this torque from this location to this location, that is from 14.35 degree to 45 degree. Integrate with respect to alpha. This is excess energy stored in the flywheel at 45 degree position of the crank. This is end of main concept and very simple problem. The main difference between flywheel and governor is, the next topic is clutch and then we'll discuss governor. Okay, so dear students, flywheel stores excess energy and governor controls fluctuation in speed due to external load. गवर्नर का फंक्शनलिटी है, और ऐसे भी हम बोल सकते हैं फ्लाईव्हील कंट्रोल्स स्पीड which is varying due to इंट्रासाइकिल फ्लक्चुएशन। साइकिल के अंदर में जो फ्लक्चुएशन की वजह से स्पीड में स्पीड वेरी होने वाला था उसको फ्लाईव्हील कंट्रोल कर रहा है, एंड ड्यू टू एक्सटर्नल लोड स्पीड वेरिएशन उसमें आपका गवर्नर कंट्रोल उसको करता है। ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। सो यहां आपका जो ना एंड होता है फ्लाईव्हील का, जो प्रीवियस ईयर के जितने सारे प्रॉब्लम थे ये एंड होता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एट द एंड ऑफ each topic we arrange live test.
15 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट होगा, जिसमें छोटे भी क्वेश्चन होंगे, बड़े भी क्वेश्चन होंगे, ब्रेक करके करके रहेंगे। तो सिस्टम क्या है, मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट डिलीवर किया, प्रीवियस ईयर के सारे प्रॉब्लम कराए, और एक पहला जो सेशन था उसमें मैं अपना मास्टर प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया था, मास्टर प्रॉब्लम, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और करेक्ट होता है। तो न्यू न्यू क्वेश्चन थे उसमें, प्रीवियस ईयर होगा, कॉन्सेप्ट हो गया, पीडीएफ चला जाएगा वेबसाइट पर। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपके पास नॉलेज हो गया, तो मैं भी तो जानूं कितना हुआ, तो मैं क्वेश्चन अपना दूंगा ना। सो दैट गाइज, वो टेस्ट सीरीज आप इतना इफेक्टिव समझते हो, वो इफेक्टिवनेस एक्चुअली में जो है ना, यहां यहां से आ रही है। और वो कहां दिख रहा है, theoretical part में। Without theory it is difficult to crack, get with good rank. So dear students, we stop this session here. Thank you for watching this video. Good night.